Look at these seeds, such tiny seeds. Look at the size. लेकिन इनका potential इतना tiny नहीं है. क्या potential है seed का? It can grow into a whole new plant, even a big tree, right? कैसे बनते होंगे ये seeds and क्या potential है इसमें, क्या राज है जिससे इतनी छोटी सी seeds इतने बड़े plant में grow हो जाती हैं? Let's study the process to know the raz of the seeds, okay? So hello, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today's topic is fertilization. Now, what is fertilization? It is the union or the fusion of the nuclei of male and the female gamete. We have already seen pollination, agents of pollination and all, cross pollination. After pollination comes the process of fertilization. Here the male gamete, the nuclei of the male gamete. What is the male gamete? It is the pollen grain, right? Pollen grain is the male gamete and the female gamete is the ovule which is present inside the ovary. When the nucleus inside the pollen grain and the nucleus of the ovule will fuse together, we'll get those magical seeds जिससे हमें मिलेगा फिर से एक new plant. Okay, so let us see the structure of pollen grain and the ovule. Now here you can see the structure of a pollen grain. A pollen grain is double walled. Outer wall is the exine. This is the outer wall which is called exine, and the inner wall, this one, is the intine. Okay. Now in a matured pollen grain, there are two nucleus present inside the cell. One is the tube nucleus and the other one is the generative nucleus. Okay. This is the structure of a matured pollen grain when it has two nucleus inside it. Okay, the tube nucleus and the generative nucleus. ये matured pollen grain किसी same species के stigma के ऊपर जब fall करेगा, then fertilization process start होगा. Okay, pollination के बाद fertilization start होगा, and then इसके इस structure में कुछ changes आएंगे, and that we will see after looking at the structure of the ovule, which is the female gamete. Okay. Now this is the structure of ovule. Ovule is the female gamete, right? Ovule कहाँ present है? It is present inside the ovary. This is the ovule जो बनने वाला है seed. And ovary क्या बनेगा? Ovary will become after fertilization. Ovary बनेगा the fruit. जो हम खाते हैं fruit, वो fruit होता है ovary of the plant. Okay. अगर एक ovule present है तो it will become a single seeded fruit. Okay. अगर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो बहुत सारे सीड्स होंगे, है ना? बहुत सारे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं जिसमें सिर्फ एक सीड होता है. दैट मीन्स इट हैज ओनली वन ओव्यूल इनसाइड इट. जितने ओव्यूल्स हैं उतने सीडेड फ्रूट को बनने वाला है. फाइन. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. सो इन द ओव्यूल दीज आर द इंटीग्यूमेंट्स. ठीक है, ये होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग. दे कैन बी वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल. फाइन. Integuments में covered है ये embryo sac. This is the embryo sac which is covered by the protective covering which is called the integument. And integuments के बीच में there is an opening. You can see ये दोनों joint नहीं है. There is a small opening which is called the micropile. क्या function है इस micropile का? This micropile is the opening जहाँ से actually pollen tube की entry होने वाली है for the fusion of the male and the female gamete. We'll see a little later. Now first let us look at the structure of the ovule. So this is micropile, the opening. Okay, this is the embryo sac inside the integuments, the protective layer. Now this embryo sac has 7 cells, 3 plus 3 plus 1. Okay, 3 plus 3 plus 1, 7 cells. Where are those 7 cells? This is 1, 2 and 3 antipodal cells. Again 1, 2, 3. This is one cell, this is one cell, and this is another cell. Okay, these three are the cells which are present at the micropile end. Okay, out of these, this one, the central one is the egg cell. Okay, and these two which are shown with the dotted lines, these two are the synergids. So two synergids and one egg cell here at the micropilar end, and at the opposite side of the micropilar end are the 3 antipodal cells, and one is the central cell. This central cell has 2 nucleus. Okay, fine. This is a central cell and the cell will have a nucleus. There are 7 cells present inside the ovule. Okay, 3 at the micropilar end. Okay, out of these 3, 2 are synergids, 1 is the egg cell. Clear? 3 at the opposite
which are called the antipodal cells, and one is the central cell. Every cell has its own nucleus, fine, but the central cell has two nuclei, and these two nuclei are called the polar nuclei. So this is altogether the structure of the ovule. Okay, now once the pollen grain has fallen on the same species, correct species पे जब pollen grain has fallen, तो stigma से कुछ sugar secrete होता है, which further allows some changes to take place in the structure of pollen grain, ठीक है, and then start होता है the process of fertilization. So you can see the changes which have taken place in the pollen grain. एक tube generate होती है from a point in the exine. जो tube generate हो रही है, it is carrying both the nuclei, okay, which we have seen in the pollen grain structure. Tube nuclei भी, nucleus भी है इसमें, and generative nucleus भी है, okay. Now the tube is growing, further growing, and जब वो micropilar end के पास प्रोसेस में होती है टुवर्ड्स रीचिंग द माइक्रोपाइलर एंड, जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई. सो अभी इसमें कितने हो गए, और द सेल इज द सेम बेटा, न्यूक्लियस इसमें पहले 2 थे, अब न्यूक्लियस कितने हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए. एक तो ट्यूब न्यूक्लियस जो था दैट इज प्रेजेंट एज इट इज, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस था दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द गैमेट न्यूक्लियाई और द स्पर्म न्यूक्लियाई. फाइन, सो सेम साइटोप्लाज्म में द सेम सेल इज कंटेनिंग नाउ द देयर आर 3 न्यूक्लियाई. ओके, अब ये वो पोलन ट्यूब है which is going to enter from the micropilar end and reach the embryo sac. Okay, you can have a look at the diagram how on after falling on the stigma and then crossing the style, the pollen tube is entering inside the micropilar end. Okay, after that what happens, micropilar end में आने के बाद we had seen there are 7 cells inside the 3 plus 3 plus 1, 7 cells inside the ovule. Now the male gamete is coming with how many nuclei, 3 nuclei. We will see the micropilar end पे जो 3 cells है and 1 the central cell which has 2 nuclei, जो जिसको polar nuclei बोलते हैं, right, polar nuclei. So when the pollen tube comes with 3 nucleus, इसमें से जो tube nucleus था उसका क्या रोल था, द होल पैसेज या जो होल पाथवे जो शो करता है ना, जो ट्यूब माइक्रोपाइल तक वो शो करता है ट्यूब न्यूक्लियस की हेल्प से. वो सारे एंजाइम्स डिसॉल्व करता है एंड समझ लो कि रास्ता बनाता है, ठीक है. जनरेटिव न्यूक्लियस को एक्चुअली पहुंचना है एम्ब्रायो सैक में, तो ट्यूब न्यूक्लियस उसका समझ लो उसको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है. वंस इट हैज रीच्ड द माइक्रोपाइल, अब माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग जहां से ट्यूब एंटर होने वाली है. After that micropilar end में tube nucleus का role is over, so it disintegrates. Okay, now once it has disintegrated, तो अब कितने nucleus हैं, there are 2 nuclei. वो कौन से nuclei है, gamete nuclei या the sperm nuclei है ना, जो generative cell से डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट हुए थे. नाउ यहाँ देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ये वो 2 न्यूक्लियाई हैं जो पोलर ट्यूब में आए हैं, विच आर द गैमेट न्यूक्लियाई. ओके, ये है एग सेल, अभी हमने डिटेल में देखा. ये एंटीपोडल सेल अभी नहीं देखते, ये सेंट्रल सेल है एंड ये सिनर्जिड है, ये एग सेल है. फाइन, ये जो 2 न्यूक्लियाई है ना बेटा, ये किसी भी एक सिनर्जिड में ये दोनों न्यूक्लियाई रिलीज हो जाएंगे, ठीक है. एनी वन ऑफ द 2 सिनर्जिड्स में ये दोनों न्यूक्लियाई रिलीज हो जाएंगे, ठीक है. बट ये 2 न्यूक्लियाई किसी एक सिनर्जिड में रिलीज होने के बाद वन ऑफ द 2, ठीक है, वन ऑफ द 2 सिनर्जिड से, अब ये रिलीज हो चुके हैं सिनर्जिड में, ठीक है, सपोज इसमें रिलीज हो गए, तो 1 आउट ऑफ दीज 2 विल फ्यूज विद द एग सेल और यहाँ बनेगा जाइगोट, ठीक है, विच विल फर्दर कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिविजन एंड देन वो डिवाइड होते होते एम्ब्रायो बनाएगा, ठीक है. ये बनेगा जाइगोट, ठीक है. एंड ये जो एक और सेल न्यूक्लियस है, ये बन जाएगा, फ्यूज हो जाएगा विद द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है. सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस थे ना, पोलर न्यूक्लियाई, ये बन जाएगा 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन. ओके, ट्रिपल फ्यूजन जिसे बोलते हैं, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है. ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे वहां पे, 2 थे पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल जो एम्ब्रायो सैक के अंदर है ओव्यूल में, और एक ये आया गैमेट सेल और द स्पर्म सेल फ्रॉम दिस ट्यूब, जिसने अपने दोनों न्यूक्लियाई पहले किसी एक सिनर्जिड को दिए एंड वहां से सिनर्जिड से, फ्रॉम द सिनर्जिड एक जो न्यूक्लियाई है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके उसने बनाया जाइगोट, एंड दूसरा वाला जो न्यूक्लियाई था
वो जाके फ्यूज हो गया ऑलरेडी प्रेजेंट टू न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ ये गैमेट न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो गया एंड यहाँ हो गया ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्यूजन हुआ ट्रिपल यहाँ पे, बट ओवरऑल प्रोसेस में 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? एक तो यहाँ हुआ है, एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट एक एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, ठीक है। मेल गैमेट में हमने देखा 2 न्यूक्लियाई आए हैं टू फ्यूज विद द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। एक न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ विद द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एग सेल एंड सेकेंड न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल सेल। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे हुआ डबल फर्टिलाइजेशन इस पूरे चैप्टर का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। What is double fertilization? कहाँ हो रहा है double fertilization? Actually, we had seen fertilization क्या है? It is the fusion or the union of the nuclei of the male and the female gamete. कितने nuclei fuse हो रहे हैं? Male के actually 2 nuclei fuse हो रहे हैं, right? One nucleus is being fused with the nucleus of the egg cell. The other sperm nuclei or the gamete nuclei is being fused with the polar nuclei. ये बनेगा endosperm, okay? So ज़ाइगोट बन जाएगा एंड एंडोस्पर्म बन जाएगा इनसाइड द सीड, ठीक है। तो हो गया सीड मैजिकल, इतनी एनर्जी है एंड द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप आई वाज क्लियर, आई कुड एक्सप्लेन द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, please feel free to ask me in the comment section. Thank you for watching this video and I hope to see you all in the next video also, but for that you need to subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Till then, take care, stay safe, bye bye.